Hello everyone, a very good afternoon to all of you. This is Ashwin Ramani, your research analyst at SBI Securities. I hope I am audible and I hope you all are able to see my screen. अगर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो आप मुझे एक बार चैट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हो so that I know you all are with me live in this session. We'll just wait for a couple of minutes and then we should be good to go with the mid-market session today. Murthy ji, good afternoon. Sudhakar ji, good morning, good afternoon. Sachin ji, Roshan ji, hello, good afternoon. Good afternoon, RT ji, Vicky ji, good morning, good afternoon to you as well. So I hope your weekend was great. Yeah, Sachin ji, another day of lackluster market. कुछ मूवमेंट ही नहीं है मार्केट्स में. So we just wait for a minute. Ankit ji, hello, good afternoon. So I hope your weekend was great. और जिन्होंने अभी ज्वाइन किया आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो if I'm audible, if I'm visible, and then we should be good to go with the session. Harish ji, good afternoon. Prithvi ji, hi to you as well. Good afternoon. Okay. Good afternoon. I'm Tamil. Yeah, my mother tongue is Tamil too. Sudhakar ji, did Trump postpone the 9 date? Yes. Bosle ji, Sajivan ji, hi, good afternoon. Okay. तो शुरू करते हैं आज का मिड मार्केट सेशन. सो ओवरनाइट डेवलपमेंट इज दैट यूएस से ये आया कि आई थिंक द ट्रम्प विल स्टार्ट सेंडिंग लेटर्स टू ऑल इट्स ट्रेडिंग पार्टनर्स saying either you accept a deal or we will apply the tariffs which we had rolled out on April 2nd. So I think what President Trump has said is that आज रात से ही वो लेटर्स भेजना शुरू कर देंगे सारे कंट्रीज को. सेकेंडली देर आर रूमर्स दैट ये जो जुलाई 9 का जो डेडलाइन है वो पोस्टपोन होके अगस्त 1 तक हो जाएगा. बट देर इज अगेन नो ऑफिशियल कंफर्मेशन येट. आई थिंक द ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है यूएस के स्कॉट बेसेंट, उन्होंने ये बोला कि शायद ये जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड हो सकता है अगस्त 1 तक. एंड अगर अगस्त 1 तक भी डील नहीं हुई तो जो अप्रैल 2 को जो टैरिफ जो अनाउंस किया था वो सारे टैरिफ्स एप्लीकेबल हो जाएंगे. सेकेंडली देर इज अ रूमर गोइंग ऑन दैट बीच में जो इंडिया एंड यूएस के बीच में देर वाज दिस मिनी ट्रेड डील दैट वाज गोइंग ऑन. So US wanted access to India's agriculture and dairy markets as well, which India was against. But I think there is some deal that we can expect. There are some unconfirmed reports that we might see an announcement regarding that in the next couple of days. So again, that is something that the markets will be keenly looking at. Thirdly, as you are aware, जो ब्रिक्स का समिट चल रहा है ब्राजील में. So ब्रिक्स is मतलब it's a एक 5 countries are part of BRICS, that is Brazil, Russia, India, China and South Africa. So उनका एक summit चल रहा है वहाँ पे. So what President Trump had tweeted today morning is that any countries that aligns with anti-American BRICS as he call it, तो उनके ऊपर भी, वो कंट्रीज के ऊपर भी 10% एडिशनल टैरिफ्स लगाया जाएगा. तो ब्रिक्स, एज यू आर अवेयर, ब्रिक्स इज ट्राइंग टू कम अप विद देयर ओन करेंसी. सो उनको ऐसा चाहिए कि वो जो यूएस के पास जो पावर है इन्फ्लुएंस करने का या वेस्टर्न कंट्रीज के पास जो पावर है इन्फ्लुएंस करने का, तो इसके लिए यूएस थोड़ा सा कॉशियस है ब्रिक्स को लेके. सो अगेन ट्रम्प का ये बयान आया आज, उनका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उन्होंने वहां पर लिखा कि अगर कोई कंट्री ब्रिक्स के साथ साइडलाइन करता है तो उनको 10% एडिशनल टैरिफ्स लगाया जाएगा. यस, वी आर पार्ट ऑफ ब्रिक्स. So I don't know if he has mentioned for the countries that are part of BRICS or the countries that sidelines with the BRICS. I think that is something that he will need to clarify that going forward. But yeah, these were the developments overnight that has come in. अगर हम यूएस मार्केट्स की बात करें, द यूएस मार्केट्स वर क्लोज्ड ऑन फ्राइडे ऑन अकाउंट ऑफ देयर इंडिपेंडेंस डे. So I think Thursday tak the US markets ended in green. If we look at the Europe markets, the Dow futures is relatively flat at 0.31% lower at this point.
अगर हम यूरोप मार्केट्स देखें, so DAX is down 0.6%, London is flat, France is up marginally up 0.09%, और Euro Stock Index is up 0.5%. But if you look at the Asian markets, Nikkei is down 0.56, Hang Seng is down 0.39, Shanghai is down 0.01. Kospi, again, it's the only Asian index that is trading in green. Kospi is up 0.17% higher. And if you look at Nifty and Sensex, both are trading sideways. Nifty is down 0.06%, Sensex is down 0.13%. So again, another day जहाँ पे मार्केट्स का कुछ मूवमेंट नजर ही नहीं आ रहा है. द रेजिस्टेंस इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, द सपोर्ट इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, एंड द मार्केट्स आर काइंड ऑफ मूविंग इन अ रेंज. So there is no positive trigger. I think the markets are eagerly waiting for the US-India trade deal to happen. And secondly, the markets are also keenly going to look at how the results are going to be for the quarter one, which we will start from this week onwards. Now, I think majorly it is the Europe markets and the Asian markets, Sudhakarji, like your Hang Seng, Shanghai, etc. I'll take your question towards the end. Now, if we look at the macro indicators, dollar index, ये 90, यहाँ पे हम देख रहे थे ऑलमोस्ट 96 का लो बनाया था यूएस डॉलर इंडेक्स, बट अभी थोड़ा सा डॉलर इज काइंड ऑफ पिकिंग स्ट्रेंथ. इट हैज गॉन टू 97.2, बट द ओवरऑल ट्रेंड इज स्टिल डाउन. तो जब तक ये 98 के नीचे रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव साइन फॉर अस. The US government bonds 10-year yield have shown some strong buying here. So if you see 1.52%, the yields had gone up by 1.52% on Thursday, and Friday it was up around 4.3. So it's a matter of it has taken resistance near its trend line. So if it goes above 4.4, 4.5%, so again chances are that the equities might come under pressure again. So the yields had kind of come down. 200 EMA के नीचे आ गया था, but 3 दिन से yields ऊपर जाने लगा है. So I think this is one thing that we need to keep a track on in the coming days. If we look at India VIX again today it is up around 1.89%. ये जो support है around 11.8 के आसपास अभी India VIX चल रहा है. So if it goes below 11 again, it is going to be a good sign for us. So at this point it doesn't look like bulls के लिए काफी ज्यादा discomforting है. So the VIX is under control. If you look at dollar by rupee again, so we saw dollar around 200 EMA के आसपास वो hover कर रहा था, but today we are seeing dollar gaining strength against rupee. So dollar is up at 85.83 now. It had made a low of 85.19, but again the key level to watch will be the 86 level. So if we go above 86, then chances are that our markets will also be under pressure. We ideally want the dollar to lose strength and not gain strength, because if dollar gains strength, then we see some outflows from our markets. We ideally want rupee to gain strength here. If we look at crude oil again, crude oil was down 0.6%. It is trading in that $69 to $65 a barrel range. So as long as it goes down, let's say it goes until 61, 63 is where the next support is placed. While $71 a barrel is where the next resistance is. So again, there is nothing major that is happening on the crude oil front. I think more than the tariffs, higher crude oil prices is the one that hurts our economy more than anything, being a net importer of crude oil. And lastly, if you look at gold, I think gold has come down. We have seen some profit booking in gold. So gold is at $3,307 an ounce. It is again taking support near its upward sloping trend line. Now, if you look at silver again, silver, as we know, it was consolidating in a range. So this $35-37 per ounce range is where the silver was consolidating. अगर इसके ऊपर भी हमें ब्रेकआउट मिलता है 37 के ऊपर, then we can see silver prices going up, but nothing much to worry on the gold and silver front as well. I think the key couple of things to look at will be how the US 10-year bonds yield move from at this point, and whether the rupee gains strength in the coming days. I think that is something that we'll be keenly looking at in the coming days. अगर हम FII positioning की बात करें कैश मार्केट में, for the whole of last week, for all the 5 days, FIIs were net sellers in the cash market. So the FIIs sold around 5,773 crores. And if we look at index futures again, the net
index futures contracts from minus 38,000, it has slowly climbed up to 65,687 negative net index futures contracts. And if you see, we were at 36%. That is where the long short ratio was last week. And it has dropped to 28.63. So still FIIs are holding more short positions than the long positions. Only 29% long positions as compared to 60, 69, almost 70% short positions is what the FIs are holding at this point. And if you look at the advanced decline ratio, on Friday, there was a mild improvement in the advanced decline ratio. So if we see, the advanced decline ratio was below 1, whereas on Friday, the advanced decline ratio jumped to 1.17. But again, the sentiment from the FIs is still bearish. There is no signs of short covering. The last time we saw short covering in our markets was on the June expiry day. So where you can see the long short ratio jump to 23 to 37. I think apart from that, the follow-up short covering nahi hua tha. I think the FIs want to still hold short positions in our markets. So as long as the FIs don't cover their short positions, chances are that we might not see momentum picking up in our market. So that was all about the FII positioning. Agar hum Indian markets, if you look at the Nifty index, again, if you look at the candle today, so Nifty, so there is more like आप बोल सकते हो इसको एक dragonfly doji like candle. So after a downtrend, we saw a dragonfly doji like candle, which is kind of considered to be a bullish reversal candle here, but again not a very strong bullish reversal candle. But if we look at today's candle, again, you can see there is a very small doji pattern. I think the range is quite small. So if you see, today's high is 25,489, today's low is 25,407. So that's roughly around 80 to 81 points range. That's a very small range where Nifty is trading currently. And if you look at the 5 minutes chart again, whatever we discussed on Friday, I think it still stands. So 25,500 is a very strong resistance for Nifty, and I don't see any strong momentum or buying coming up in Nifty until 25,600 is taken out on the upside. And if you see today, around 25,480, 25,490 is where Nifty took resistance, and on the downside, 25,420 is where Nifty has taken support. So intraday basis pe, as long as it stays in the range, I think it will continue to stay in the range here. So we need a breakout either about 25,500 or below 25,400 on the downside. So unless and until we don't get that, I think Nifty is expected to stay in a range. और अगर हम OI positioning की बात करें, the total OI, maximum OI is at 25,500. So you see there is a huge call writing as compared to put writing at 25,500. So I don't see Nifty going about 25,500 on an intraday basis unless this data changes. And अगर हम intraday activity भी देखें तो 25,500 में आज के दिन पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रहा है एज कंपेयर टू पुट राइटिंग. सो 25,500 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी. And if we look at 25,400, that is acting as a support. So 25,400 में काफी ज्यादा put writing है as compared to call writing. And even if you look at the change in OI, there is more put writing than the call writing here. So it is quite evident from, if you look at the price action on the 5 minutes chart, and if you look at the option data, Nifty is expected to stay between 25,400, 25,500. The trend still remains sideways to negative in Nifty. If we look at Sensex, again, Sensex pretty much similar story. If I look at the daily chart for Sensex, if you see, the range is very small. Again, we saw hammer like candle on Friday, and today there is a doji like candle where there is an indecision among both the buyers and the sellers. So high was around 83,516, low is around 83,262. So it's a very narrow range of around 350, 380 points here. So I think there is no real momentum in Sensex. Again, if you see, Sensex took resistance around 83,490, 83,500 levels. Whereas on the downside, it took support around 83,287 levels here. So again, like we said, the main key resistance level for Sensex would be 84,000. तो जब तक हमें Sensex 84,000 के ऊपर जाते हुए नहीं दिखता है, तो तब तक सेंसेक्स का भी ट्रेंड साइडवेज टू नेगेटिव रह सकता है. इंट्राडे बेसिस पे, कंसिडरिंग वी हैव दी सेंसेक्स एक्सपायरी टुमारो,
I think this 83,490, 83,500 will act as a very strong resistance level. I think if we get a breakout above 83,500, then we can expect Sensex to go towards 83,700 levels. But unless 83,500 is not taken out, Sensex is expected to remain sideways. And on the downside, I feel 83,270, 83,250. अगर इसके नीचे हमें ब्रेकडाउन मिलता है तो हो सकता है हमें फिर से सेंसेक्स 83,000 के और जाते हुए नजर आए, बिकॉज दैट इज वेयर द प्रीवियस सपोर्ट फॉर सेंसेक्स इज प्लेस्ड एट. वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड इन सच मार्केट्स. ऐसे मार्केट्स में अगर आप ऑप्शन बायर्स हो तो सकता है आपका प्रीमियम मेल्ट होगा, प्रीमियम डीके होगा. एंड कंसिडरिंग द टाइम इट इज टेकिंग फॉर द प्राइस टू मूव, ऐसे केसेस में आपका प्रीमियम मेल्ट हो जाता है एंड ऑप्शन बायर्स टेंड टू लूज मनी इन दिस मार्केट्स. So ऐसे markets में it's better to be option sellers. You either sell calls, you either sell puts, and try to take advantage of the premium decay because the markets are going nowhere. It is trading absolutely sideways here. So on such days, you have to make tweak to your strategy. If you're an option buyer, you have to be like option seller on such days, or you can go with any hedge strategies where the volatility is going to cool off. There is going to be a crash in volatility, or the volatility is going to stay flat. So maybe some credit spread strategies is also something that you can deploy in such kind of markets, or even range bound strategies like butterflies, condors. These are the strategies that you can look for in such type of markets, because this is clearly not a trending market. It is a range bound market, and until and unless these resistance levels are not taken out, like 25,600 in Nifty, 84,000 in Sensex, we are not going, unless FII start covering their shorts, we are not going to see that kind of momentum coming up in our markets. और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, अगेन बैंक निफ्टी अगेन प्रेटी सिमिलर स्टोरी. देयर इज अ डोजी कैंडल फॉर्मेशन ऑन द डेली चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी. It is neither going up, it's neither going down, it's trading absolutely flat. I think the key level to watch out would be 57,000, 57,200. Because अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करूं तो ऐसा लग रहा है शायद बैंक निफ्टी 57,000 होल्ड करेगा, बिकॉज पुट राइटर्स मार्जिनली ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉल राइटर्स एट द 57,000 स्ट्राइक. बट अगर मैं चेंज इन ओवाई देखूं तो कॉल राइटर्स काफी दबाव डाल रहे हैं पुट राइटर्स पर. देयर इज अ मैसिव कॉल राइटिंग अराउंड 1,43,000 एज कंपेयर टू ओनली 60,000 ऑफ पुट राइटिंग हियर. So yes, there is still presence of bulls at 57,000, but I feel call writers are trying to push away the bulls from 57,000, and if this trend continues, then chances are that we might get a close below 57,000. So unless and until we are not getting a strong close above 57,000, 57,100, very difficult to get momentum in bank nifty also. And I think the major resistance level for bank nifty would be 57,600 on the upside. जब तक वो 57,600 के ऊपर नहीं जाए, तब तक शायद एक strong momentum शायद हमें नहीं देखने को मिलेगा. And on the downside, I feel 56,600, 56,500 is likely to act as a strong support for bank nifty. अगर मैं bank nifty की बात करूँ, 56,500 में put writing है, और आज के दिन भी देखो तो 56,500 में पुट राइटर्स अपना पोजीशंस बनाते हुए नजर आ रहे हैं. सो आई थिंक फॉर बैंक निफ्टी 56,500 ऑन द डाउनसाइड इज लाइकली टू एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल. I think again the trend for all the three indices will be sideways to negative. Unless and until resistance doesn't get taken out, don't be aggressively long in either of the indices, guys. I think go with either credit spread strategies or range bound strategies or option selling, but don't be an option buyer in this kind of market. I think you will only lose money, considering that the premium is neither going up, it's neither going down. So it's better to avoid being an option buyer in this kind of market. Talking about the key sectors and talking about the stocks that are in focus. So today, if you see Nifty oil and gas, जैसे हम पिछले 2-3 दिनों से देखते आ रहे कि ऑयल एंड गैस में एक अच्छा ब्रेकआउट मिला था रेशियो चार्ट में, और एक स्ट्रॉन्ग फॉलो अप मूव भी नजर आई हमें ऑयल एंड गैस में. तो अगर मैं ऑयल एंड गैस की बात करूं, देयर इज वन स्टॉक दैट यू कैन कीप इन योर रेडार इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन. So in the morning trade, Indian Oil Corporation had gone up to 154, 155. There is some profit booking at the higher levels. So we got a trend line breakout here. The price was trading above its key moving averages. RSI was above 70. ADX is going above the 25 mark. So as long as it stays above the 146 mark, the trend is going to be positive for IOC. So keep a track on IOC. I think this 145, 146 will act as a support. The other sector that has been in focus, I think we
saw a breakout coming in the infra space. So infra by Nifty ratio chart, this is one sector that we've been keenly looking at. So once we got a breakout, I think infra stocks have started to do well. I think there is one stock from the infra space, and that is also holding up Nifty today. Now, if you look at the heat map for Nifty, look at HDFC Bank is mildly positive, ICICI Bank is red, Infi is in red, Bharti Airtel is mildly positive here. So Reliance is up 0.8%, and there is some support that we are getting from the FMCG space. So today there is some kind of buying that we are seeing in the FMCG counters. FMCG is usually considered to be a defensive pick, but I think Reliance is the one that is holding up Nifty. If Reliance starts losing strength, then chances are that we might go down from the current levels, because or for the Nifty to go up, we need to see HDFC, ICICI, Bharti Airtel, Infi picking up buying. But it's only Reliance that is holding up Nifty. That is why we are seeing a flat movement in Nifty today. अगर Reliance में भी selling आ जाता है तो हो जाएगा, शायद हमें और market नीचे जाते हुए नजर आए. But nevertheless, Reliance is looking positive. We got a breakout. It kind of consolidated, and today again we are seeing a strong buying in Reliance today. I think the level of 1,500 will now act as a strong support for Reliance. The ADX is well above 40, RSI is above 70. The price is trading above its key moving averages. So overall trend is looking positive for Reliance at this point of time. The other sector, okay, that is showing some kind of reversals is your healthcare space. अगर आप healthcare by Nifty का ratio chart देखोगे तो काफी टाइम से healthcare और pharma, ये जो दो sectors है काफी टाइम से underperform किए. But I think healthcare looks like we might get a breakout in Nifty healthcare by Nifty's ratio chart. And we are seeing there is some kind of traction that is forming in the healthcare space as well. तो अगर मैं healthcare stocks की बात करूँ यहाँ पे, so today if you see Metropolis, again Metropolis has gone above its 200-day EMA. So this breakout is supported by the volume spike as well. ADX has gone about 25, RSI has gone to 70. And if it sustains above the 200-day EMA, I think chances are that अगर यहाँ से एक follow up move आता है, so Metropolis is one stock that can perform well in the coming days. So keep a track on Metropolis. Ideally, it should sustain above its 200-day EMA, which is currently at 1790 levels. The other stock that is doing well is, or you can keep in your radar, is Aarti Drugs. अगर मैं Aarti Drugs की बात करूँ, the price is trading near its previous swing high of around 498 500 levels. The price is again above its key moving averages. ADX has gone, it's moving towards 25 levels. RSI is above 60. So if we get a strong breakout above 500, chances are that we can see Aarti Drugs also doing well in the coming days. And I think around 460, 465 will act as a strong support for Aarti Drugs. The other stock that is doing well is Dixon Technologies. अगर हम Dixon Technologies की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा 200 डे EMA ब्रेक किया, यहाँ पे प्राइस नीचे गया, बट वहाँ पे 200 डे EMA को सपोर्ट करके द प्राइस हैज काइंड ऑफ गॉन अप. थोड़ा सा स्टेडी मूवमेंट देखने को मिल रहा है. आज 15668 का हाई था डिक्सन में, बट आई थिंक वो डिक्सन एक हाई बना के वहां से प्राइस फिर से नीचे आ गया है. सो राइट नाउ इट इज एट 15384. इट्स अ मैटर ऑफ गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग क्लोज. अगर हमें 55300 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिलता है तो हो सकता है हमें डिक्सन में भी एक अच्छा मूव दिखाई दे इन द कमिंग डेज. और इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा वो होगा 14960 14970 लेवल्स के आसपास. दी अदर स्टॉक जो आप आपके रडार पे रख सकते हो वो है आपका मैस्टेक. अगर हम मैस्टेक की बात करें तो काफी टाइम का अंडर परफॉर्मेंस के बाद थोड़ा सा ऊपर मूव हो रहा था ये स्टॉक, और अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक साइडवेज रेंज में ट्रेड कर रहा था, और अगर हमें 2562 इसका प्रीवियस हाई भी है, पिछले टाइम 2560 तो आया था, नीचे आ गया, बट अगर आप देख रहे हो ये 20 डे EMA से सपोर्ट लेते हुए ऊपर गया है. और अगर हमें 2579 2580 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिलता है तो हो सकता है हमें मैस्टेक में भी एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाई दे इन दी कमिंग डेज. और इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा वो 2400 2410 के आसपास होगा. So Mastech is also one stock that you can keep in your radar. The other stock that is doing well is Triveni Turbine. अगर हम Triveni Turbine की बात करें तो एक strong resistance है 627 630 levels के आसपास. अराउंड 3rd जुलाई को हमें एक ब्रेकआउट मिला था यहाँ पे 627 630 का.
फिर एक फॉलो अप मूव नजर आया, आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रहा है, बट अगर जब तक त्रिवेणी टर्बाइन 625 के ऊपर है, द ट्रेंड इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, एंड इफ यू सी अ मूव अबाउट 660 देन चांसेस आर दैट हमें त्रिवेणी टर्बाइन में भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई दे। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज त्रिवेणी टर्बाइन को 624 के ऊपर सस्टेन करना होगा, जब तक वो उसके ऊपर सस्टेन करता है द ट्रेंड इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। The another stock is Muthoot Finance. अगर हम Muthoot Finance की बात करें, भले ही there is an RSI divergence that is visible on the daily chart, but I feel as long as it is above the trend line here, जब तक ये trend line को resist करता है, if it goes about 2670, अगर ये 2670 के ऊपर एक strong close देता है और उसके ऊपर में एक strong follow up मूव आता है, तो हो सकता है हमें मुथूट फाइनेंस और ऊपर जाते हुए नजर आए। यू कैन सी आरएसआई स्लाइटली गोइंग डाउन, एडीएक्स हैज आल्सो काइंड ऑफ पीक्ड आउट एंड इट इज गोइंग डाउन हियर, बट इट्स अ मैटर ऑफ गेटिंग अ क्लोज अबाउट 2670। अगर 2670 के ऊपर हमें एक स्ट्रॉन्ग क्लोज मिलता है, देन वी कैन सी सम आउट परफॉर्मेंस इन मुथूट फाइनेंस एज वेल। एंड लास्टली वी आर ऑल्सो सीइंग सम ट्रैक्शन इन कैपिटल मार्केट स्टॉक्स। तो हमें देखा था लास्ट फ्राइडे को जेन स्ट्रीट का न्यूज आने के बाद कैपिटल मार्केट स्टॉक्स प्रेशर में थे, और बट अगर हम आज देखेंगे, सो देयर इज वन स्टॉक दैट हैज काइंड ऑफ ब्रोकन आउट ऑफ द कंसोलिडेशन फेज, इज योर यूटीआई एएमसी। तो यूटीआई एएमसी आप देखोगे एक असेंडिंग ट्रायंगल लाइक पैटर्न, जहाँ पे प्राइस एक हायर लोस के ऊपर मूव कर रहा है, और द रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट अराउंड द सेम एरिया, और आज एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है एक अच्छा खासे वॉल्यूम्स के साथ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यूटीआई एएमसी में हमें 1300 1305 के ऊपर ब्रेकआउट सस्टेन होना चाहिए, 1305 के ऊपर हमें ब्रेकआउट मिलना चाहिए। आरएसआई भी 60 के ऊपर है, एडीएक्स भी काइंड ऑफ फ्लैट है, बट इट इज ट्रेडिंग अबाउट 25, और यहाँ से एक फॉलो अप आता है तो हो सकता है मैं यूटीआई एएमसी यहाँ से और 80-90 पॉइंट ऊपर जाते हुए नजर आए इन दी कमिंग डेज। एंड लास्टली आई हैव टू टेल यू वन थिंग, अगर हम आज देखेंगे आज के सेशन में, इट्स दी एफएमसीजी स्टॉक्स। अगर आप देखोगे, जैसे कि हमने हीट मैप में भी देखा था, हिंदुस्तान यूनिलीवर 3% ऊपर है, आईटीसी 1% ऊपर है, नेस्ले इज अप अराउंड 0.8%। बट अगर हम ओवरऑल रेशियो चार्ट देखेंगे एफएमसीजी बाय निफ्टी, तो ओवरऑल एफएमसीजी काफी टाइम से अंडर परफॉर्म ही किया है। थोड़ा सा एक रिकवरी आई है आज एफएमसीजी स्पेस में। आज का कैंडल देख के ये नहीं बता सकते कि हाँ ये बॉटम बन गया, वी नीड सम मोर एक्स्ट्रा साइंस ऑफ कंफर्मेशन। तो आने वाले दिनों में अगर ये आउट परफॉर्मेंस सस्टेन करता है, और अगर शायद हमें इसके ऊपर ये जो मूविंग एवरेजेस के ऊपर जाते हुए नजर आता है रेशो चार्ट में, देन वी कैन काइंड ऑफ लुक एट द एफएमसीजी स्पेस। आई थिंक जो अभी जो Q1 के रिजल्ट्स आएंगे उस पर भी काफी ध्यान होगा, बट आज का कैंडल, आज का बाइंग देके हम नहीं बोल सकते कि ये रिवर्सल एक्चुअली में आ गया एफएमसीजी में। वी नीड सम मोर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन बिफोर वी कैन एक्चुअली कंक्लूड कि दिस इज काइंड ऑफ एफएमसीजी हैज बॉटम्ड आउट और यहाँ से अब ऊपर जा सकता है। सो structurally still FMCG is still underperforming, it's still in a downtrend. We'll need to wait for a couple of more days to see if there is actually a reversal that has happened in FMCG. So this is about this was all about today's mid market session, guys. I hope it was informative, and let us start off with our question and answer session. If you have any queries, any doubts, you can let me know in the chat box. Mohit ji, I understand there are some people who understand Hindi, there are some people who understand English. So, if I talk in Hindi, I get requests saying, please talk in English. If I talk in English, I get requests saying, please talk in Hindi. So I try to keep a mix of both Hindi and English, so that, both of you all can actually benefit out of this. Okay, so that is the reason why I keep switching between Hindi and English. I think there is no other reason. Parambrata ji is saying KPI green. Okay, let me look at KPI green. See the trend थोड़ा सा sideways है, अभी ADX भी देखेंगे तो थोड़ा सा डल है, RSI भी 60 के नीचे आ गया। I would say wait until 541, 542 gets taken out on the upside. परमप्रता जी, अगर 542 के ऊपर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हो सकता है हमें मोमेंटम मिले, बट वेट अंटिल 542 इज टेकन आउट। Sachin ji is saying, sir, your view on TechM chart looks weak. Yeah, I think IT में एक momentum आया था, but the
इट लुक्स वीक अगेन 20 डे में के भी नीचे आ गया है. आइडियली ये सस्टेन होना चाहिए था. इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस ये सपोर्ट था, बट आई फील द नेक्स्ट रेजिस्टेंस वुड बी अराउंड 1600 लेवल्स. आरएसआई भी अगर आप देखोगे 40 के नीचे जा रहा है. एडीएक्स भी थोड़ा सा पीक आउट होके नीचे की तरफ जा रहा है. सो देखना पड़ेगा कि ये 50 डे ये में से सपोर्ट लेके रिवर्सल देता है कि नहीं. बट या द चार्ट स्ट्रक्चर डेफिनेटली लुक्स वीक टुडे. आई थिंक आईटी में थोड़ा सा सेलिंग दिखाई दे रहा है आज हमें. सो वेट अंटिल 1600 एंड देन लुक फॉर अ रिवर्सल साइंस. और अगर 1600 के नीचे जाता है तो आई थिंक हो सकता है थोड़ा सा और प्रेशर में रहे. PC Jewelers, Vicky G is asking for PC Jewelers. Okay. PC Jewelers, if you see last 2 days, it has run up a lot. I'm not sure as to what has caused this, but it has kind of run up a lot. And I think it's a penny stock, Vicky G. At the end of the day, it is at 19. वो जितना तेजी से ऊपर गया उससे दुगना तेजी से वो नीचे भी आ सकता है. So these stocks, it can't be trusted like that. बट नेवरदलेस अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर देखूं तो 1920 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस है. तो आई वुड से सिंस इट हैज ऑलरेडी रिजन अ लॉट, अगर आप देखोगे यहाँ पे 5%, 19%, 14%, तो आई थिंक अवॉइड करना विकी जी एट दिस पॉइंट. वन इज क्योंकि जितना तेजी से ऊपर गया उतना दुगनी तेजी से नीचे भी आ सकता है. तीसरा ऑलरेडी काफी ऊपर चला गया है, तो हो सकता है जिन्होंने यहाँ पे एंटर किया होगा अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, हो सकता है सर्किट भी लग जाए ऐसे स्टॉक में. So I think better to avoid at this point is what I feel. Mohit ji is asking for Jamna Auto. So if I look at Jamna Auto again, वो consolidate कर रहा है, एक range में है यहाँ पे. The indicators are not that positive. Only positive is ADX is going up. But I feel wait until we get a breakout about 97, 98. उसके ऊपर हमें breakout मिलता है मोहित जी, तो हो सकता है हमें जमना ऑटो में एक buying interest दिखाई दे. अभी के लिए momentum weak है, एकदम trend एकदम flat है यहाँ पे. HAL order book is good. Execution of products is very long. Is it worth keeping? Yeah, HAL is one of the good defense counters that are there. Technically speaking, also, if you see, बाकी सारे defense counters में profit booking दिखाई दिया है, but HAL is kind of steadily going up since last 4-5 sessions. And I think it has gone above its 20-day EMA as well. The main important resistance would be 5,150, 5,160. But if we get a breakout above that, chances are that the future is good for Hindustan Aeronautics from a long-term perspective. From a long-term perspective, it's definitely worth keeping HAL in your portfolio. But from a short-term perspective, I think 5,150 will act as a strong resistance. ITC hotels can be added at present levels. Rakesh ji is asking. रुक जाओ राकेश जी, बिकॉज थोड़ा सा करेक्शन दिखाई दिया. अभी वो प्राइस 20-डे ईएमए के आसपास आया है. अगर 227 के ऊपर जाता है, बट भले ही ट्रेंड पॉजिटिव है, एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन से मूव कर रहा है यहाँ पे. बट वेट अंटिल वी गेट अ ब्रेकआउट अबाउट 227. इफ वी गेट अ ब्रेकआउट अबाउट 227, देन इट्स you can consider adding it. Yeah, market sideways, Ankit ji, absolutely. If US again put sanction, do we expect volatility to go up? Yes, I think it can go up. I think we'll have to look at what letters is the US going to send to India. But there is also a mini trade deal that has been announced between India and US. So I think the market is keenly awaiting that. I think what the market has factored in, Shivji, is US and India are going ahead with the deal. ऐसा नहीं लग रहा है कि US sanction करेगा इंडिया के ऊपर. I think kind of the markets has kind of factored that. But yes, agar if we go back to that original 26% tariff and 10% standard tariffs, and if the trade deal falls off, and the interesting part is अगर आप देखोगे इंडिया विक्स भी वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास है, अराउंड 11.8, 11.9. एंड देयर इज एंड सपोर्ट से ही एक विक्स ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है हमें. I think July 9, so we'll have to wait until Wednesday, Shivji, to see if volatility goes up. But as of this point, there is nothing that we are seeing on the charts that can help us decode if volatility is going to rise. Nifty 50 में अब कब आएगा? आई थिंक 25,600 एक स्ट्रॉन्ग लेवल है अंकित जी. जब तक 25,600 नहीं टूटता है तब तक शायद साइडवेज टू नेगेटिव ही रह सकता है. Since the market is at a all-time high, should we do long-term buying as of now? So if you look at Nifty अभी भी long-term high तक नहीं पहुंचा. अगर आप all-time high देखोगे 26,277 है निफ्टी का.
वेराज निफ्टी अभी 25,430 के आसपास है, तो अभी भी अगर आप देखोगे काफी है हाई, अभी तक ऑल टाइम हाई अब तक हमने आया नहीं है यहाँ पे। सी अगर आप SIP कर रहे हो तो एनी टाइम इज अ गुड टाइम टू डू SIPs, शिव जी। मार्केट डाउन हो, अप हो, साइडवेज हो, अगर आपका एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच है मार्केट्स में, यू कैन इन्वेस्ट एनी टाइम इन दी मार्केट्स। Structurally if you see Nifty is in an uptrend, but there is ideally high time पे आप क्या कर सकते हो, you can follow a staggered buying approach. मान लो आपको एक आपने कैपिटल अलॉट किया है कि मान लो आपको एक 50,000, मान लो आपको 1 लाख डालना है, बट आप थोड़ा कॉशियस भी हो कि मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे है, सो रादर देन पुटिंग ऑल 1 लाख एट वन को आप पहले क्या करना, ट्रांचेस में उसको इन्वेस्ट करना, कि मान लो आपको पहले 25,000 आप डालना, फिर देखना मार्केट बढ़ता है कि नहीं, अगर घटता है नीचे देन थोड़ा सा आप समय लेना है यहाँ पे, बहुत ही नीचे गिरता है तो आप हो सकता है आपको एक अच्छा प्राइस मिले यहाँ पे, तो आप फिर से आपका नेक्स्ट ट्रांच आप डाल सकते हो, 50,000 आप डाल दो, फिर और थोड़ा नीचे गिरता है तो आप होल्ड करना, फिर आपको थोड़ा सा रिवर्सल साइंस दिखता है, आपका इनिशियल लेवल के ऊपर चला गया है, देन थोड़ा जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है आपको, देन अगेन यू कैन पुट वन मोर ट्रांच ऑफ बाइंग. So that is the approach that you can take in the markets rather than putting all money at one go. Follow this staggered approach of buying in the markets here. And as far as SIP is concerned, you can fix a date every month, and whether markets are up, down, sideways, I think SIPs doesn't matter, because in the long run you can even consider putting money in Nifty Bs. Nifty Bs, it Nifty ETF exactly Nifty की movement को track करता है. So Nifty Bs है, आपके small cap mid cap Bs भी है. I think you can consider looking at that as well. Vicky G is asking for Tega Industries. सी टेगा इंडस्ट्रीज इज गुड. यहाँ पे फ्राइडे को हमें ब्रेकआउट मिला था, वॉल्यूम्स भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है. RSI काफी ओवरबॉट हो गया है, ADX इज मूविंग टुवर्ड्स 25. आई थिंक आप क्या कर सकते हो, 1662 या 1660 के आसपास आपका स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो विकी जी, एंड यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड, ताकि अगर गिरेगा तो भी एटलीस्ट आपका जो नुकसान होगा दैट विल बी समवेयर अराउंड 15 पॉइंट्स एंड नॉट मोर देन दैट. सिंस यू हैव ऑलरेडी बॉट, आई थिंक इट्स बेटर, ये जो प्रीवियस हाई है वहां पे 1650 1660 के आसपास आप ट्रेल कर सकते हो. अंकित जी इज आस्किंग 9 जुलाई के बाद किस तरफ मार्केट में मूव आएगा, वो तो 9 जुलाई के बाद पता चलेगा अंकित जी, बिकॉज अभी बैठ के हॉनेस्टली आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि मार्केट्स कहाँ पे जाएगा. यू हैव टू टेक वन डे एट अ टाइम. सी ओवरऑल स्ट्रक्चरली निफ्टी का जो ट्रेंड है वो बुलिश ही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि एक बड़ा फॉल आएगा मार्केट्स में. अगर हमने देखा कि फॉल आता भी है, जैसे इसराइल ईरान के बीच में जब भी एक वॉर टाइप सिचुएशन हुआ था, जब भी टैरिफ अनाउंस हुआ था, हमें गैप डाउन तो मिला था, बट हमारे मार्केट्स ने वो गैप डाउन को, वो जो शॉक्स आए थे उसको ऑब्जॉर्व कर लिया था, और वहां से एक तेजी हमें देखने को मिली थी. सो एनी डाउन ट्रेंड दैट यू सी, इट इज नॉट वेरी शार्प. भले हमें साइडवेज मूवमेंट मिलता है, बट वी आर नॉट सीइंग अ वेरी शार्प फॉल. एंड अगर सैंक्शंस होता भी है या अगर कुछ नेगेटिव होता भी है, आई डोंट सी अ बिग फॉल कमिंग इन दी मार्केट्स. मे बी 25, 525, 425, 300 तक जा सकता है, बट अगेन वी विल सी सम काइंड ऑफ रिकवरी कमिंग अप. आई थिंक दैट इज व्हाट आई फील हाउ द निफ्टी इज गोइंग टू बिहेव. बट ओवरऑल व्यू तो पॉजिटिव ही लग रहा है अंकित जी. Parambrata ji is saying you bought check at 171. So yes, so check is good. After 4 days of consolidation, there is some kind of the prices are 1.37% upper. I think around 175 is where you can trail your stop loss, Parambrata ji. I think cost के ऊपर आप आपका stop loss trail कर सकते हो. I think for targets you can see around 191, because that is where the previous high is placed. And if it takes out 191, then around it can go to 203, 204 levels as well. So those are the possible targets that you can look at. Sudhakar ji saying your view on Bosch. See, Bosch is good. It has kind of risen a lot. I think the overall trend is positive. ADX is going about 25. RSI is near the 80 level. So it is kind of in an overbought zone. So I think around 34,340 is where, if you're already holding, then 34,340, that is Friday's low, is where you can keep your stop loss. I think chances are that it can move towards 36,700, 36,800 levels on the upside. So I think these are the levels that you can look at.
Can we pledge shares to buy ETF in margin? I think yes, you can do that, Harish ji. You can. Rating agencies, I think you're looking at CRISIL is what you're looking at, Sudhakar ji. So अगर मैं CRISIL की बात करूँ यहाँ पे, तो CRISIL अभी 20-day EMA के आसपास है. I think once we get a move above 6,120, then chances are that we can see up move picking up. But it's very important that it holds this 20-day EMA here. अगर इसके नीचे जाता है तो हो सकता है थोड़ा सा प्रेशर आए हमें. सर 9 जुलाई को टैरिफ लागू हो जाएगा? नहीं होगा. अगर ट्रेड डील अगर होता है यूएस इंडिया के बीच में, तो हमें वो देखना पड़ेगा अंकित जी की क्या ट्रेड डील है. उसके हिसाब से ही फिर हमें पता चलेगा कि वो मार्केट्स उसको नेगेटिवली लेता है या पॉजिटिवली लेता है. प्रशांत जी इज आस्किंग फॉर Hyundai Motors. इफ आई लुक एट Hyundai Motors, ये अपट्रेंड के बाद अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है काउंटर पे. तो अराउंड 2044, 2040, 2050 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा प्रशांत जी. तो अगर ये 2040 के नीचे जाता है, इट्स बेटर टू एग्जिट, बिकॉज आई थिंक जितने लोग ने ये लेवल्स पे बाइंग किए होंगे, वो शायद अपना पोजीशंस यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं. सो अराउंड 2040 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा. 2040 के नीचे जाता है, देन इट्स बेटर टू एग्जिट Hyundai Motors. Murthy ji is asking for Cummins. Cummins is good. Again, it's part of the infra space. I would say wait until this around 3,400, 3,000, 3,410, 3,450 gets taken out on the upside, because there are a couple of resistance here. One around 3,410, one is around 3,450. I think once we get a breakout above 3,410, 3,450, then chances are that Cummins can move up in the coming days. So keep a track on these levels. आज के लिए FMCG bullish है, जैसे मैंने बताया अंकित जी. अब तक इसको हम रिवर्सल नहीं मान सकते हैं. भले ही आज FMCG स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है आज के लिए, बट अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे तो FMCG अभी भी काफी टाइम से डाउन रहा है. तो थोड़ा हमें 2-3 दिन रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये जो आज एक रिवर्सल देखने को मिला है FMCG में, वो सस्टेन करता है कि नहीं. इफ इट डजंट, इफ इट स्टार्ट्स गोइंग डाउन, देन हो सकता है कि ये रिवर्सल ना हो. बट अगर ऊपर जाता है तो हम बोल सकते हैं कि FMCG is kind of bottoming out here. But yes, if we see the strongest sectors today is FMCG, and Nifty, the only stock that is holding up Nifty is Reliance, because that is up 0.89%. But if you look at the top 4 heavyweights, HDFC, ICICI, Infi, Bharti Airtel, they are not moving up. Where can we check Sensex constituent weightage? I think you can do that on the BSE India website, Shivji. आप BSE India वेबसाइट पे जाओगे, आई थिंक निफ्टी इंडाइसेस में तो आपको मिल जाएगा सेंसेक्स का. बट गिव मी सम टाइम. आई थिंक टुमारो सेशन में आपको मैं बताता हूँ कि सेंसेक्स का आपका वेटेज आपको कहाँ से मिल जाएगा. आई थिंक इट शुड बी अवेलेबल ऑन BSE इंडियाज वेबसाइट. वहां पे जाके आप इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट आप सर्च करोगे, शायद आपको मिल जाएगा. ठीक है, मुझे जस्ट एक दिन देना शिव जी, मैं कल के सेशन में आपको मैं बताऊंगा ये सेंसेक्स का कॉन्स्टिट्यूएंट वेटेज आपको कहाँ से मिलेगा. मैं आपको दिखा दूंगा कल के सेशन में. ठीक है. Any other queries, any other doubts, guys, do let me know in the chat box if you have any other queries. And if you are finding these mid-market sessions informative, guys, do share it with your friends and families as well, so that they can also benefit. So we discuss everything right from the global markets, FII positioning, macro indicators, Nifty, Bank Nifty, Sensex indices. We look at key sectors, key stocks. I take your questions also daily. So if you are finding this informative, please subscribe to our channel if you have not done already, and do let your friends, families, and relatives know as well. Any other doubts, any other queries, guys? Okay, so I guess no other doubts for the day. So I'll end today's session then, guys. Because why are FI stock futures almost constant? So very difficult to say. I think if you look at the long short ratio, there have been days where they've been buying futures, they've been covering shorts, and again they have been buying, adding more shorts here. So FII is still looking at the data. I don't what it looks like is FIIs are still not very positive on our markets, because the long short ratio is at the lowest point since quite some time now. Ideally हम जब देखते हैं कि long short ratio इतना नीचे आता है, वो ऊपर भी ऐसे ही जाता है.
But for quite some time, so almost since the start of May now, there's geopolitical tensions. Then we had Operation Sindoor. Then we have this US-India trade deals. So there is a lot that has happened in the last 3 months. So the market is not getting a clear direction. जिसकी वजह से शायद FIIs के पास एक लैक ऑफ कन्विक्शन आप बोल सकते हो, जिसकी वजह से आपको इम्प्रूव होते हुए नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे. So and the momentum is also lacking. आप clearly देख सकते हो price action में भी the momentum is not there. We've seen ऊपर जाता है, then it kind of comes down and it kind of consolidates. So जब तक वो पूरा clarity नहीं मिल जाता है, तब तक शायद हमें ऐसे ही trend देखने को मिलेगा. ठीक है. सर 2 year का experience है. Good, अंकित जी, superb. So that's all from my end, guys. Hi, that was all about today's mid-market session. And take care and stay safe. I wish you all a happy trading session. And see you all again tomorrow at 12:30 on SBI Securities YouTube channel, guys. Bye, guys. Take care. And I see you all soon. Vicky ji saying, where can you see block deals? So if you follow our SBI Securities Twitter channel, Vicky ji, हम daily block deals के बारे में post करते हैं कि उस दिन में कौन सा block deal, bulk deal हुआ. सो डेली एक इन्फोग्राफिक जाता है. आप ट्विटर चैनल जाओगे SBI सिक्योरिटीज का, वहां पे आपको डेली ब्लॉक डील्स दिख जाएगा. या US India trade deal is a major hurdle for Nifty. Bye guys, take care and I'll see you all soon tomorrow at 12:30. Take care and stay safe.